Well, students, today we are going to discuss an important topic that is capitalism. And in this lecture, we will discuss that how it affects people. We will discuss that what it is, how it works, and who is for and against it. So basically, I have taken this an article by Kim Kelly, to which I am going to explain. So let's start. Capitalism is defined as an economic system in which a country's trade, industry, and profits are controlled by private companies, as you know it very well, instead of by the people whose time and labor powers those companies. So, US and many other nations around the world are capitalist countries, but capitalism is not the only economic system available throughout history. Other countries have embraced other systems like socialism or communism. So it is important to explore what capitalism actually is. CNN recently reported that 66% of the people between the ages of 21 and 32 have nothing saved for retirement. However, according to Salon, the reason many millennials haven't been investing in mutual funds for building up their own financial nest eggs isn't because they are too broke or that they lack personal responsibility. So it's because they think our current economic system, capitalism, will cease to exist by the time they are in the 60s. In contrast, capitalism has become markedly less popular among the younger generations. The Washington Post, noting it in April 2016, that in one survey, a majority of young adults between 18 to 29 said they reject it outrightly. ये सर्वे है 2016 का जो वाशिंगटन पोस्ट का है जिसमें इसे एडल्ट एज जो 18 से 29 के हैं वो इसको आउटराइटली रिजेक्ट कर रहे हैं यंग जनरेशन आ रही है इसमें. So you have probably heard the word capitalist floating around in the past couple of years. यानी कैपिटलिस्ट को आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद देख ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं. तो मैं भी इन रिलेशन टू दी एंटी फाशिस्ट या एंटी कैपिटलिस्ट प्रोटेस्ट एट द Trump inauguration. So what is capitalism and why are people so passionate about it one way or the other? वेयर डिड कैपिटलिज्म कम फ्रॉम यानी ये कहाँ से आया है किधर से आया है ये आइडियोलॉजी क्या है. द ओरिजिन ऑफ कैपिटलिज्म आर कॉम्प्लिकेटेड हैं एंड स्ट्रेच बैक टू द 16th सेंचुरी में आते हैं जब ब्रिटिश सिस्टम ऑफ पावर लार्जली कोलैप्स्ड आफ्टर द ब्लैक डेथ जो कि उधर हुआ था बरतानिया में. So which was a deadly plague ताउन था that killed up तकरीबन 60% of Europe and की entire population इससे खत्म हो गई थी. A newly formed class of merchants began trade with foreign countries. फिर एक नया सिलसिला और ताजरों ने एक नया और नए सिरे से दूसरे ममालिक के साथ तिजारत शुरू कर दी. And this newfound demand for export hurt local economy जाहिर सी बात है उसको तो शदीद धचका पहुंचा and began to dictate overall production and pricing of goods और अशिया की कीमतों के हवाले से ये सिलसिला रहा. So it also led to the spread of colonialism, slavery and imperialism. और ये आपके यहाँ साम्राज्यत का गुलामदराना सिलसिले का और कॉलोनियलिज्म का आगाज़ हो जाता है ये यहाँ से. ठीक है जी, जब से एक अंदाजे के मुताबिक कि प्लैंक ने यूरोप को लपेट में लिया और उसके बाद एक नया सिलसिला के तिजारत फ़ॉरेन के साथ होने लगी और फिर कैपिटलिज्म का आहिस्ता-आहिस्ता आगाज़ होने लगा. ठीक है, और इसके साथ कॉलोनियलिज्म, स्लेवरी और इंपीरियलिज्म का आगाज़ होने लगा. ठीक है जी, आगे.
The death of feudalism, a hierarchical system often seen as oppressive that kept poor people bonded to their master's land. यानी a death of feudalism, ठीक है जी, जागीरदाराना, a hierarchical system often seen as oppressive that kept poor people bonded to their master's land, which they framed in exchange for a place to live and military protection, also left rural British peasants with no homes and no work, which eventually funneled them away from the countryside and into urban centers. So these former farm workers then had to sell their labor in a newly competitive work environment in order to survive, while the state worked in concert with the new capitalists to establish a Marxism wage and clamp down on the beggars. ठीक है जी? So by the 18th century, England had converted into an industrial nation, and the dawn of the Industrial Revolution saw an explosion of manufacturing overtake the Iceland. So it is within those smoky factories and flammable textile mills that our modern idea of capitalism and the opposition to it began to fully flourish. और 1776 में क्या स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने अपना ट्रेटाइज, उसका नाम था इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ द नेशंस, पॉपुलरली वेल्थ ऑफ द नेशन ही कहा जाता है उसको, which is regarded as the bedrock upon which modern capitalism stands. So though some of his specific ideas about value and labor differ from those of modern economists, Smith is often called the father of capitalism, Adam Smith. ठीक है जी, उसने अपनी किताब वेल्थ ऑफ नेशन में इसको हाईलाइट किया हुआ है. सो व्हाट डज इट मीन टू बी कैपिटलिस्ट, मतलब क्या है? Individual capitalists are typically wealthy people who have a large amount of capital, money, or other financial assets invested in business and who benefit from the system of capitalism by making increased profits and thereby adding to their wealth. ठीक हो गया? A capitalist nation is dominated by free market होती है, which is an economic system in which both prices and production are dictated by corporations के हाथों में होता है and private कंपनियों के उसमें होता है and competition with one another, और एक सख्त मुकाबला होता है इनका आपस में, and places a heavy focus on private property पर, इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी पर होता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस पर होता है एंड लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन होती है. गवर्नमेंट का कोई वो इंटरवेंशन होती है लेकिन लिमिटेड होती है, और हेल्दी किस्म का जबरदस्त किस्म का कंपनियों का कॉर्पोरेशन का आपस में मुकाबला होता है. और जनरली दोज टू द राइट ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम टेंड टू बी प्रो कैपिटलिस्ट, दोज ऑन द लेफ्ट वेयर टुवर्ड्स एंटी कैपिटल. जो इसके साथ हो रहे होते हैं राइट पे होते हैं तो वो प्रो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो इसके एंटी होते हैं तो उनको हम एंटी कैपिटलिस्ट कहते हैं. How does capitalism impact people? लोगों पर क्या है इसका? The kind of impact that capitalism has on our life depends on whether you are a worker or a boss. ठीक है ना, यहाँ आपने फर्क करना है कि आप काम करने वाले हैं या आप बॉस हैं. So for someone who owns a company, आगे आप कंपनी के मालिक हैं and employees other workers को नौकरी दे दी हुई है तो कैपिटलिज्म में make sense. The more profit your company brings in, जितना मुनाफा आप कमाते हैं, the more रिसोर्सेज यू हैव टू शेयर विद योर वर्कर्स, और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को अपने वर्कर्स के साथ आप शेयर करते हैं तो विच थियोरेटिकली improves everyone's standard of living. So it's all based on the principle of supply and demand. तो ये सप्लाई ऑन डिमांड, क्या कितनी सप्लाई आपको चीज़ों की मिल रही है और आपको मार्केट में डिमांड क्या है. तो एंड इन कैपिटलिज्म कंजम्पशन इज किंग. जितनी चीज़ें आपकी इस्तेमाल हो रही होती हैं उतना ही आपको फ़ायदा हो रहा है, तो यानी कंजम्पशन इज किंग. The problem is that many capitalist bosses are not great at sharing the wealth, which is why one of the major critics of capitalism that it is a huge driver of inequality both social and economic. सोसाइटी में अमीर अमीर हो रहा होता है और गरीब गरीब हो रहा होता है, सोसाइटी के अंदर एक तरह से इनइक्वालिटी आ जाती है. ठीक है जी. अब आगे चलते हैं हम इसी के हवाले से कि कैपिटलिज्म टेक्स द पोजीशन दैट ग्रीड इज गुड, which its supporters say is a positive thing. Greed drives profits, and profits drive innovation and product development, which means there are more choices available for those who can afford them. So its opponents say that capitalism by nature exploitative है भाई and leads to a brutally divided society
that tramples the working classes in favor of flattering the richest wallet. यानी अमीरों के जेब भर रहे हैं आप, उनको फायदा हो रहा है और ब्रूटली सोसाइटी को इसने डिवाइड कर दिया है, अमीर और गरीब, और इस तरह से उनकी एक्सप्लॉइटेशन हो रही है. फॉर एग्जांपल in recent history, the Occupy Wall Street movement began as an anti-capitalist protest. ये हुआ था ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट. इसे हम तारीख में एंटी कैपिटलिस्ट प्रोटेस्ट कहते हैं, अगेंस्ट दी 1% रिचेस्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास. यानी वो कहते हैं कि 1% रिच क्लास है जिसने कब्जा किया हुआ है तमाम उसके ऊपर, एंड आस्क व्हाई दे आर अलाउड टू ग्रो फैट एंड हैप्पी, कि वो क्यों हैप्पी हो रहा है while 20% of all American children live in poverty. के अमेरिका के तकरीबन 20% बच्चे गरीब हैं, गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, और 1% रूल कर रहा है. कैपिटलिस्ट क्लास क्यों है? तो ये ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट मूवमेंट चली थी, एंटी कैपिटलिस्ट प्रोटेस्ट. अच्छा, वाई डू पीपल सपोर्ट कैपिटलिज्म? फिर बावजूद इसके लोग इसको सपोर्ट क्यों करते हैं? कैपिटलिज्म्स सपोर्टर्स बिलीव इन सेवरल की पॉइंट्स. बहुत से इनके इकोनॉमिक फ्रीडम लीड्स टू अ पॉलिटिकल फ्रीडम. इकोनॉमिक फ्रीडम वो कहते हैं अगर है तो इससे पॉलिटिकल फ्रीडम भी है. एंड हैविंग अ स्टेट ओन मींस ऑफ प्रोडक्शन कैन लीड टू अ फेडरल overreach and authoritarianism. They view it as the only sensible way to organize a society. वो कहते हैं कि इकोनॉमिक है तो पॉलिटिकल भी, और सोसाइटी ऑर्गेनाइज हो रही होती है, और इंसिस्टिंग दैट अल्टरनेटिव लाइक सोशलिज्म, कम्युनिज्म या एनार्किज्म्स आर डूम्ड टू फेल, कि ये नाकाम हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे. इस फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने कहा था, whose pro capitalism stance is said to have devastated the British working class, once said there is no alternative. उसने कहा था कि कोई अल्टरनेटिव नहीं है. When asked to consider capitalism negative impact on the environment and our shrinking natural resources, कम हो रहे हैं, जाहिर सी बात है, उसको प्रॉफिट चाहिए तो वो ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज यूज होंगे. Many say that those resources will only become more valuable and able to generate more capital as they continue to diminish. कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल जनरेट होगा और वो इकोनॉमिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग होता जाएगा. कंपनी है, कॉरपोरेशन है, या जो भी है. दे आल्सो बिलीव दैट द competition between the companies benefits consumers by making products more affordable, and that capitalism's dog eat dog atmosphere encourages people to work harder to achieve their dreams. So they are likely to dismiss anti-capitalist concerns about inequality and oppression by saying that rich people are rich. अमीर अमीर है क्यों? They are more productive than their poor counterparts. के वो ज़्यादा पैदा कर रहा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इसलिए वो अमीर है, as compared to the poor on its counterpart side. Why do people oppose capitalism? लोग इसको oppose क्यों करते हैं? Anti-capitalist anti-capitalists view capitalism as, एंड जो कैपिटलिज्म के खिलाफ हैं वो ये कहते हैं कि ये कैपिटलिज्म जो है ये इनह्यूमन है, एंटी डेमोक्रेटिक है, अनसस्टेनेबल है, डीपली एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम है, और इसको डिसमेंटल्ड होना चाहिए. क्यों? They see it as inherently at odds with democracy because of how capitalist bosses hold power over workers in the workplace. कि किस तरह से जो कैपिटलिस्ट है वो अपना होल्ड रखता है हर जगह पर, काम पर, एज ए बॉस, और वर्क प्लेस पर. एंड द फैक्ट दैट द मोर कैपिटल वन एक्यूर्स द मोर पावर दे हैव, कि जितनी उसके पास कैपिटल आएगी उतनी ज़्यादा उसके पास पावर आती है. एज जर्मन कम्युनिस्ट फिलोसोफर एंड इकोनॉमिस्ट कार्ल मार्क्स, जो कि इसका बिल्कुल मुखालिफ है, परहैप्स द मोस्ट फेमस अपोनेंट ऑफ कैपिटलिज्म इन हिस्ट्री. कार्ल मार्क्स का मेरा एक लेक्चर भी आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख लेना है कि किस तरह से वो अपने यहाँ कम्युनिज्म की प्रमोशन कर रहा है और एंटी कैपिटलिज्म का वो अपना केस किस तरह से आगे प्रेजेंट कर रहा है. Who ironically enough helped to popularize the term, wrote, उसकी किताब है कैपिटल
दास कैपिटल वॉल्यूम है अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन और दास उसकी जस्ट एज man is governed in religion by the product of his own brain. So in capitalism, capitalist production, he is governed by the product of his own hand. जस्ट एज मैन मैं दोबारा पढ़ता हूँ जस्ट एज मैन इज गवर्न इन रिलीजन जिस तरह के एक मजहब में इंसान उसको उसके मजहब के उसके पर अमल करता है बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ओन ब्रेन कि ये जो दैट इज रिलीजन के बारे में क्या दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैन बाय हिज ओन ब्रेन वो कहते हैं इसी तरह से इन कैपिटलिस्ट प्रोडक्शन ही इज गवर्न बाय द प्रोडक्ट्स ऑफ हिज ओन हैंड के कैपिटलिज्म में वो खुद ही चीज बनाता है और खुद ही उस पर फिर उसको अमल करना उस पर वो गवर्न कर रही होती है उसका मजदूर हो जाता है ठीक है जी आगे चलते हैं The essential and anti-capitalist argument is that the hallmark of capitalism is poverty यानी जितनी ज्यादा गुर्बत है तो poverty है and the midst of plenty they say the immense suffering and violence that has been forced upon the laboring classes. Again, the essential anti-capitalist argument is that the hallmark of capitalism is poverty, gurbat hai, in the midst of plenty. They say this is immense suffering and violence that has been forced upon the laboring classes, the ruthless emphasis on profits over people, the proliferation of wage slavery, and which people have no choice but to sell their labor. के पास उनके पास कोई choice नहीं है अपनी अपनी लेबर को फरोख्त करते हैं और उसे अपना कमा रहे हैं या जिंदा रह रहे हैं which we see in every industry from fast food to corporate office work and the social alienation. ठीक है जी और एक टाइम ऐसा आ जाता है कि वो एलिनेट हो जाता है और एलिनेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स और फिर वो कम्युनिज्म की तरफ निकलेगा तो उसको काम से ज़्यादा पैसों से लगाव हो जाता है और काम को इंटरेस्ट के बगैर करता है तो ये एलिनेशन एलिनेशन का कंसेप्ट मैंने उस अपने एक यूट्यूब लेक्चर में क्लियर किया हुआ है होप यू विल view that so students thank you very much I hope that you have understand all this